कोविड चल रहा है नहीं चल रहा है, बट एक चीज जो बहुत अच्छे से चला है वो है कोविन ऐप। हमारे फॉरेन मिनिस्टर श्री जयशंकर जी ने भी कहा दैट व्हेन यू गो टू यूएस देन यू कैन लुक एट योर वैक्सीनेशन ऑन द ऐप, जो कि his son even in US cannot. This is a global phenomenal case study and success that we have achieved. I want to ask you कि आज आप इसको कैसे देख रहे हैं, और what more can now we expect with this global case study that we have created? लोगों ने जो कोविन को बनाया था शुरुआत में, उसके कई दो तीन पर्पस थे, दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट ओवरआर्चिंग ऑब्जेक्टिव थे। एक ऑब्जेक्टिव था कि दिस शुड बी इंक्लूसिव, इट शुड बी इजी फॉर पीपल टू यूज, सो पीपल जस्ट यूज देयर मोबाइल नंबर एंड ओटीपी, नंबर वन. Number two, it should also enable more than one person, because in a family, suppose one person only has got a smartphone, then it should list all the family members. Third is that it should be API based. It should enable partners to connect with us. तो हमारा काम एप्लीकेशन बनाना नहीं है, हमारा काम प्लेटफॉर्म बनाना है. तो हम लोगों ने एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया, उस प्लेटफॉर्म से कोई भी कनेक्ट कर सकता है यूजिंग द स्टैंडर्ड APIs. So that will increase the reach of this platform, because मान लीजिए हमारा कोई एप्लीकेशन बनाए, मोबाइल एप्लीकेशन, और मोबाइल एप्लीकेशन का फिर डाउनलोड शुरू करें, और डाउनलोड शुरू करके फिर, तो ये बहुत समस्या वाली चीज है. तो why can't the applications which are already in the hands of the people, why can't they also start connecting with us? So that was the third objective. चौथा था कि भाई it should be multi language, मतलब अंग्रेजी सब लोग नहीं समझते हैं हिंदुस्तान में, तो मल्टी लैंग्वेज होना चाहिए. तो ये भी ऑब्जेक्टिव था. तीसरा अगला ऑब्जेक्टिव था कि इट शुड बी स्केलेबल. अल्टीमेटली वैक्सीनेटिंग 1/6 ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन इज नॉट अ ट्रिवियल टास्क. It's basically it is a very major task, and therefore it has to be scalable. It should be able to take. So for example, in one day we did 25 million vaccination, and that basically translated to about 3,000 vaccinations per second at a peak time. Now 3,000 records being hit per second, and people were searching for the hospitals, etc., etc. We were actually getting a hit of 55,000 hits per second on our system. So this scalability is also very, very important, because things will happen throughout the country, and people will. So that scalability is another part. So ease of use, scalability, then interoperability with multiple partners. These were some of the defining principles of COVID. तो ये प्रिंसिपल करने के बाद हम लोगों ने उसको लॉन्च किया, एंड आई थिंक इट प्रूव टू बी अ सक्सेस. नाउ वी हैव 2 बिलियन प्लस पार्ट. नाउ इट के 4 कंपोनेंट हैं, श्रद्धा. सो आई थिंक आई वांट टू एक्सप्लेन टू यू एज टू व्हाई दिस कैन बी repurposed for multiple other applications. Sir. Yes, please tell us. One is the registration module and a search module. It basically says कि मैं अपना नाम रजिस्टर कर दूंगा. That's number one. दूसरा है कि मैं सर्च कर लूंगा कि ये वैक्सीनेशन कहाँ कौन कौन सी फैसिलिटी पर अवेलेबल है. तो मान लीजिए मुझे पहली डोज मैंने लगवाई थी कोवैक्सीन की, तो अब कोवैक्सीन के कौन कौन से अस्पताल है नियर बाय. सो वन इज रजिस्ट्रेशन एंड सर्च मॉड्यूल, राइट. Second module, and this will be largely used by the citizens. Citizens will basically use that particular part, registration and search. Then third is the search and booking also. Basically you can book the appointments. So search the hospitals, search the vacancies in those hospitals, and book the appointment. This is for the citizens. Now at the hospital end, because everything has to be digitally recorded, there is what is called a vaccinator module, which basically vaccinators will use. So when you go to the hospital, either you provide your registration number, which basically plugging in that registration number, one person will be able to sort of pop up your data. That's number one, and then vaccinate you. Or alternatively, you have not registered a priori, then you go to the hospital and tell your name and details, and give your identification proof, whatever you got, and then register. So the fellow will then make the entry and then vaccinate. So this is vaccinator module. Third basically module is the hospitals module. Hospitals module is basically where the hospitals publish their vacancies, publish as to what is the timing of their opening, what is the number of patients they will be able to cater,
what is the vaccination they are doing, what vaccines they are using, and what is the cost of those vaccinations. In private sector, it may be some cost. In public sector, it may be free of cost. So that's the third module. The fourth module is the certificate module, which basically, once I have done the vaccination, my vaccination has happened, and then I am able to download the certificate of vaccination. And because at the time of vaccination, this particular event was created that I was vaccinated, then the certificate can be downloaded. So these are four components of the COVID. Fortunately, COVID has hopefully gone, and now we don't want that COVID should also go, right? Similarly, Aarogya Setu, which was a track and trace application, we want that also to survive and to basically be repurposed. Yeah. So now what we are doing is we are repurposing COVID for multiple things. Now let me give you an example. Vaccination of COVID is similar to vaccination for children, like the polio drops or like the diphtheria or like other kinds of vaccinations, right? Yeah. Essentially, the same logic can be applied of people able to book their vaccination for their children at any public facility or private facility, go and vaccinate their child, then come back, have a certificate downloaded. One. Secondly, they will also, like CoWIN, they will also be reminded that your second dose of polio is due now on this date. Yeah. Currently, there is no system which exists like that. Yeah. Right? And once you are done second dose, you can do second dose, and then a child can download his entire history of vaccination. And we are doing something called, this is a, DIVOC is a system of certification. That DIVOC is basically what is called verifiable credentials. This is verified. So this certificate is non-forgeable and verified certificate. It is verified from the source. So this is the verified credentials we will use for बच्चों का वैक्सीनेशन ऑल्सो. तो हम लोग जो है सेम चीज है, उसमें भी बुकिंग करेगा, उसमें भी सर्च करेगा हॉस्पिटल्स को, उसमें हॉस्पिटल वैक्सीनेट करेगा तो उसको लगा देगा, लगाने के बाद हमारे पास डेटा रहेगा, डेटा के बाद हम उसको रिमाइंड करा सकते हैं, रिमाइंड. So basically it's a demand and supply problem. Yeah. On the demand side you have the children, and on the supply side you have the hospitals and vaccinators, and you create a digital system which actually tracks all the children and then reminds them of their vaccination schedules. That is something which we are doing, number one. Number two, I think the blood bank ecosystem also. People can register that I want to donate the blood. People can register for book the appointments at the blood donation camps, right? So registration, booking, once they do the blood donation, then the certificate of blood donation, same thing. And then of course, किसी को जरूरत पड़ी ब्लड की तो ही कैन सर्च कि कहाँ कौन सा ब्लड अवेलेबल है, B+ type है, B negative type है. So I think again you can see the analogy. They are all analogous applications. Yeah. Similarly, a more complicated one is the what is called organ donation ecosystem. All these three repurposed code will create a transparency. Yeah. Will create convenience for citizens, and will basically be good for the health of our country. So this is what we are proposing to do. Yeah, no, but sir, ये बहुत ही आश्वासन के साथ, इट्स अ मैटर ऑफ, मैं कह सकती हूँ प्राइड, क्योंकि जो भी हो रहा है, जो भी दुनिया में हो रहा है, ये इंडिया में व्हेन इट कम्स टू हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो क्रिएट किया गया है इतनी जल्दी, ये बहुत बड़ी बात है. एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द क्वेश्चन कि आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, अभी नंबर सुनने में आया है कि 23 करोड़ 23.08 crores account have been created. Tell us about that. This is impressive number again, और बहुत ही छोटे दौरान में ये हुआ है. You see, what we have done is, जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जिसको प्रधानमंत्री ने 27th of September को लास्ट ईयर लॉन्च किया नेशन वाइड, उसका बेसिक उद्देश्य ये है, हाउ वी कैन डिजिटाइज द हेल्थ सेक्टर, हाउ वी कैन यूज टेक्नोलॉजी फॉर डिलीवरिंग अफोर्डेबल, quality and accessible health services to the people of our country. तो कैसे हम कॉस्ट कम कर सकते हैं, जैसे टेली कंसल्टेशन के माध्यम से वी कैन क्रिएट डिस्टेंस में चलना नहीं पड़ेगा आदमी को, तो वी कैन एक्चुअली रिड्यूस एंड वी कैन इंक्रीज द एक्सेस. कोई आदमी रिमोट एरिया में, बिहार में हमारा पड़ा हुआ है, वहां पे भी, वहां से भी दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के डॉक्टर से बात कर सकता है. तो ये बेसिक उद्देश्य है हमारे देश में, क्योंकि
इतनी अच्छी कनेक्टिविटी अब हो गई है, 120 करोड़ फोन कनेक्शंस हैं, 880 करोड़ हमारे पास इंटरनेट है, 60 करोड़ हमारे पास मोबाइल्स हैं, और 25-2.5 करोड़ प्रति तिमाही के आधार पर बढ़ रहे हैं, और सबसे सस्ता डेटा रेट है, 4G कनेक्टिविटी है, एवरीबडी इज एबल टू मेक वीडियो कॉल्स, है ना, कंसल्टेशन इज नॉट अ प्रॉब्लम। हमारे बिहार से जो लोग हमारे यहाँ आते हैं दिल्ली में मजदूरी करने, वो भी शाम को अपने बाल बच्चों से बात करते हैं वीडियो कॉल पे, उनको भी एक लगता है कि दे आर कनेक्टेड। तो ये बहुत बड़ा काम हिंदुस्तान में हुआ है डिजिटल कनेक्टिविटी को बड़ा करने का, बिल्कुल यूबिक्विटस करने का। तो अब ये देखा गया कि भाई इस कनेक्टिविटी को और इस वीडियो कंसल्टेशन को इनफॉर्मली तो बहुत लोग कर रहे हैं। आप डॉक्टर साहब से, अपने डॉक्टर साहब से बोलते हैं अच्छा भाई मेरे रैशेज हो गए स्किन में, तो सर बता दीजिए क्या करें, तो बोले अच्छा वीडियो कॉल पे आ जाओ तो हम जरा बता देते हैं तुमको। तो वो वीडियो कॉल पे आप अपना दिखाइए बांह को और कहिए हाँ देखिए, बोले ये है, ये इस तरह से। बट डॉक्टर साहब लोगों को ये आदत पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं है? क्यों? बेचारे को फीस नहीं मिलती है। मतलब ये सब बहुत इनफॉर्मल तरीके से हो रहा है। तो हम लोगों ने कहा कि व्हाई कांट वी कनेक्ट ऑल दीज डॉट्स एंड व्हाई कांट वी मेक द सिस्टम इन अ होलिस्टिक मैनर so that it starts working like a system and not like a ad hoc stuff. Yeah. तो ये जो आभा जो हम लोगों ने बनाया वो बेसिकली ये है कि आपको एक नंबर दे दिया गया, अकाउंट नंबर। आपका हो सकता है 0 बैलेंस अकाउंट खोल दिया हमने कि भाई अब कुछ है नहीं उसमें। अब अगली बार से आपका जो भी रिकॉर्ड बने, डिजिटल रिकॉर्ड, वो उस अकाउंट में चला जाए, वो उस अकाउंट से लिंक हो जाए। चला जाएगा मतलब ये नहीं फिजिकली चला जाएगा, बिकॉज डिजिटल चीजें हैं, रहेगा वहीं पर, लेकिन उसका एक रेफरेंस आईडी, रेफरेंस लिंक क्रिएट हो जाएगा कि ये साहब रिकॉर्ड जो है शर्मा जी का है या श्रद्धा का है। ठीक है ना? नाउ all the records which are being created in the basic hospitals, अलग hospitals, अगर वो सब डिजिटल हो जाएंगे, then this person will have access to all these health digital records on his mobile. Yes. Using the Aadhaar number as a reference link ID. Yes. Link number. This is the purpose of the Aadhaar number, whereby a person will be able to have access to his or her health records, will be able to see them, will be able to store them in his or her mobile, will be able to share with the doctor or anybody who wants. Suppose I have a prescription, I can share the prescription with my pharmacy and get the refill or get the things for my this thing. And it will all be digitally verifiable, which means that these records will be basically digitally credentials type के record होंगे, जिसकी बात मैंने अभी की। The idea is that Ayushman Bharat Health Account is a kind of account which basically links all your health record and enables you to share these health records with anybody and everybody. सर ये बहुत ही it is an equivalent to जैसे UPI सबको आसान कर दिया है ट्रांजैक्शन, इस तरह से ये हेल्थ को, जो कि बहुत which is even personal and painful. Yes. Not only that, जैसे UPI में आपका वर्चुअल पेमेंट एड्रेस बनाता है UPI, उस प्रकार से ये this is आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट is another address. Yes. Health address. In some sense, it's a health address of a person. Yes. ये सर प्राइम मिनिस्टर ने अभी कहा है कि 6 फोकस एरियाज हैं हेल्थ केयर के लिए, गवर्नमेंट के लिए: प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, ऑफरिंग सर्विसेज इन रूरल एरियाज, एस्टैब्लिशिंग मेडिकल कॉलेजेस इन सिटीज, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पैरामेडिकल स्टाफ एंड इंट्रोड्यूसिंग न्यू टेक्नोलॉजीज एंड इंश्योरिंग अवेलेबिलिटी ऑफ चीप मेडिसिन। सर मैं पूछना चाहती हूँ कि NHA इस विजन को कैसे, मतलब कैसे इन्वॉल्व होगा, कैसे इम्प्लीमेंटेशन में पार्टनर करेगा, क्या आप इसके बारे में सोच रहे हैं? हम लोगों का जो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर वाला जो एरिया है, उस एरिया में वंस वी इनेबल दी टेलीमेडिसिन फॉर एग्जांपल, मान लीजिए अभी क्या होता है कि अभी डॉक्टर बिल्कुल मतलब लास्ट स्टेज पे मरीज पहुंचता है तो वो सोचता है कि भाई मैं डॉक्टर के पास जाऊं, मेरा घर में ठीक नहीं हो रहा है। अब व्हेन यू हैव अ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ कनेक्टिंग विद अ डॉक्टर, sharing your problem with him, then I think problem can be detected much earlier than currently the case is. So I think the digital health जो होगा, प्लस दूसरे नंबर आपने मान लीजिए आपका एक्सरे हो गया, आपका ब्लड रिपोर्ट हो गया, बाकी सब चीज हो गया. Now if you can easily share those records digitally with the doctor or with the other radiologist etc, then you will be able to figure out कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम है. और एक इंटरेस्टिंग बात मैं बताऊं आपको कि अभी हम लोगों ने कहा है कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के जो सॉल्यूशंस है,
अभी तक इन सॉल्यूशंस को यूज करने का तरीका था कि भाई आप खरीद लीजिए इन सॉल्यूशंस को, लेकिन नहीं, अब सॉफ्टवेयर एज सर्विस इज आल्सो वन ऑफ द पैराडाइम्स वेयर बाय यू, आप मतलब उसमें घुसा दीजिए अपना डिजिटल एक्सरे, उस सॉल्यूशन में सबमिट कर दीजिए, दैट सॉल्यूशन विल कम बैक टू यू एंड से भाई आपकी ये प्रॉब्लम है, इट विल एनालाइज इट. सो एसेंशियली ऑल दीज डिजिटल काइंड ऑफ डायग्नोस्टिक सॉल्यूशंस विल आल्सो बी अवेलेबल ऑनलाइन. तो उस प्रकार से होगा कि मान लीजिए आपने ब्लड का 10 रिपोर्ट आपके पास है, देन दी सॉल्यूशन कैन आल्सो टेल यू कि भाई आपका ये प्रॉब्लम है और आप इसको दिखवाइए किसी डॉक्टर से. सो आई थिंक availability of multiple diagnostic tools, availability of teleconsultations, and availability of these digital sort of artifacts will enable you to have a much better control of your health, and therefore provide a preventive kind of stuff. That is, preventive healthcare will increase. This is one part, because the health seeking behavior of people will change. Currently from a last stage to the first stage में लोग आ जाएंगे. This is one part. Then the offering services in rural areas, I think again teleconsultation will enable that. इतना सस्ता डेटा. अच्छा, दूसरे नंबर, जिसके पास नहीं है स्मार्टफोन, वो कॉमन सर्विस सेंटर में जाकर के, कॉमन सर्विस सेंटर will also start having a kiosk of teleconsultation where you can show. So basically रिमोट रूरल एरिया में एक्सेस बढ़ाने का तरीका तो यही है, कम्युनिकेशन सिस्टम्स, which we will be doing. Then of course number of paramedical staff and introducing new technologies. तो आप मतलब टेक्नोलॉजी की बात मैं कर ही रहा हूँ, तो दिस इज व्हाट आई थिंक वी विल डू. हम लोग जैसे बुकिंग, अभी जैसे हम लोगों ने क्या किया था कुछ दिनों पहले, कुछ वर्षों पहले, 2014 में, इनफैक्ट व्हेन आई वाज सेक्रेटरी आईटी, वी इंट्रोड्यूस्ड समथिंग कॉल्ड ORS, ऑनलाइन रिजर्वेशन सिस्टम इन द हॉस्पिटल. तो होता क्या था कि हमारे यहाँ जब देखते थे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में भीड़ लगी रहती है, नंबर 1. नंबर 2, बेचारे 10 दिन से लेकर के धर्मशालाओं में लोग रहते हैं, गांव के एरिया से आकर के पैसा खर्च करते हैं. एवरी डे दे गेट अप एंड 4 बजे लाइन में लगते हैं, 12 बजे लाइन खत्म हो जाती है, उनका नंबर नहीं आता है, फिर दोबारा लगते हैं. तो ये समस्या जो है ना, बहुत गंभीर समस्या थी. तो हमने कहा भाई इसके लिए क्यों नहीं हम घर बैठे अपना एक अपॉइंटमेंट बुक कर लें. तो वो ऑनलाइन रिजर्वेशन सिस्टम हमने शुरू किया. अब हम चाहते हैं कि आभा जो नंबर है हमारा, आभा नंबर को ही स्कैन करके आई कैन शेयर माई डेटा. तो मान लीजिए हम हॉस्पिटल में पहुंच गए, रजिस्ट्रेशन काउंटर पे है, रजिस्ट्रेशन काउंटर पे न जाने के बजाय यहाँ जगह जगह पे अपना QR कोड रखा हुआ है, उस पर स्कैन करिए, अपना डेटा ट्रांसफर करिए, ऑटोमेटिक रजिस्टर हो जाइए, और ऑटोमेटिकली अपना जो है वो भी छाप सकते हैं, अपना कार्ड भी. सो वी विल बेसिकली द एम ऑफ टेक्नोलॉजी शुड बी टू ईज पीपल्स लाइफ. यस, उनका उद्देश्य, कोई भी टेक्नोलॉजी कितनी महान टेक्नोलॉजी क्यों ना हो, उसका कोई यूजलेस है if it does not improve the people's experience in life. Availability of cheap medicine, as you know, the जनौषधि केंद्र बन रहे हैं. हम लोगों ने PMJY में ये किया है कि जब मेडिसिन के लिए हम पैसा अगर देते हैं, 15 दिन की मेडिसिन आफ्टर द इलाज, then we give the पैसा in digital coupon to him. हम उसके मोबाइल पे हम उसका डिजिटल कूपन, इसको हम लोगों ने ई-रूपी कहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको 2 अगस्त 2021 में लॉन्च किया था, ई-रूपी. उसका हम भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं अपने PMJY में, जिससे कि मतलब it's basically a direct benefit transfer with a purpose to a person specific and purpose specific. तो ये हम लोग चीप मेडिसिन को अवेलेबल कराने के लिए हम लोग ये काम कर रहे हैं. और बाकी जो एरिया है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना, मेडिकल कॉलेजेस इन सिटीज, नंबर ऑफ पैरामेडिकल स्टाफ, ये सब तो हेल्थ मिनिस्ट्री अपना काम कर रहा है. NHA का बहुत ज्यादा इसमें रोल नहीं है, लेकिन NHA का रोल डिजिटल टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना और PMJY को स्ट्रेंथन करना और उसमें भी यूज टेक्नोलॉजी का करना. सर, आपने आज बहुत बड़ी बात बोली, बिकॉज आई ऑपरेट इन द टेक वर्ल्ड, स्टार्टअप वर्ल्ड. आपने कहा कि जो भी टेक है उससे लोगों की जिंदगी में इम्पैक्ट करना, एंड व्हाट यू आर डूइंग थ्रू NHA, जो भी ये सब हुआ है, आयुष्मान भारत अकाउंट, जो हेल्थ अकाउंट्स हुए हैं, कोवैक्सीन ऐप, कोविन ऐप, इन सबसे यू मेकिंग लाइफ इजी. और मैं जैसे बिहार से हूँ, हम ग्रो अप किए ट्रेन में एक्सरे ले लेकर, मतलब ढूंढ कर, वो अलग दुनिया है. और ये जो अब जो दुनिया होगी वो एक आप अलग दुनिया बना रहे हैं. एंड थैंक यू सो मच. आई अगेन फील वेरी एनर्जाइज्ड. आई एम श्योर एवरीवन वाचिंग फील्स वेरी प्राउड, वेरी एनर्जाइज्ड, क्योंकि एक दिन जाकर घर में डिफरेंस करने वाली बात है. सर, जाने से पहले एक बात पूछूंगी, हमेशा पूछती हूँ आपसे, अभी किस चीज का मजा आ रहा है? लाइक यू ऑलवेज एंजॉय, यू आर सो पैशनेट अबाउट व्हाट यू डू. अभी व्हाट इज कीपिंग यू एक्साइटेड?
नो अभी वर्तमान में हम लोगों को यही आनंद आ रहा है कि किस तरह से हम लोग, देखिए मैंने हेल्थ सेक्टर में कभी काम नहीं किया श्रद्धा। This is I think I have now been working for about 44 years plus. Now I have never been in the health sector, but मुझे ये लगता है कि हेल्थ में इस समय दिस इज द राइट टाइम टू यूज टेक्नोलॉजी इन हेल्थ सेक्टर, बिकॉज टेक्नोलॉजी से बहुत बड़ा फायदा होगा और लोगों की बहुत सुविधाएं बढ़ेंगी। तो मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। आई हैव ऑलवेज एंजॉयड माय जॉब, व्हाटएवर जॉब इट हैज बीन, वेदर TRAI और व्हाटएवर। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि किसी तरह से हम टेक्नोलॉजी को कैसे इस्तेमाल करके लोगों के जीवन को बेहतर कर सकते। कोविन फॉर एग्जांपल, अब मुझे मतलब ये दायित्व दिया गया माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं तो रिटायर हो गया था इसमें सितंबर 2020 में। तो मुझे माननीय प्रधानमंत्री जी ने आदेश दिया कि भाई ये कोविन को आप बनाइए, कोविन को आगे बढ़ाइए। तो हम लोगों ने आकर के जनवरी से स्टार्ट किया काम। तो खूब मजा आया कोविन के डेवलपमेंट में, डिजाइन करने में, उसको लोगों से करने में, तो अच्छा लगा। और सौभाग्य से कोविन कभी ब्रेकडाउन भी नहीं हुआ। कई लोगों ने उसको डिस्क्रेडिट करने का प्रयास किया। तो टेक्नोलॉजी फॉर गुड, दैट्स व्हाट इज And then what you create, history will remember, and history will remember it with lot of heart, affection and thankfulness. बहुत लोगों को कितना सुविधा मिला होगा, छोड़िए बड़े शहरों की बात, छोटे छोटे जगहों से कितना डिफरेंस किया। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, एंड दैट इज व्हाट वी वांट टू मेक द डिफरेंस इन लाइफ ऑफ द लास्ट पर्सन इन दिस कंट्री। कुछ भी कर सकें, बिकॉज आई एम नॉट कोई मतलब हम क्रांतिकारी नहीं है, हम तो सरकारी नौकर हैं जो अपना काम कर रहे हैं, ठीक है ना। इट्स नॉट अ ग्रेट वर्क आई एम डूइंग, आई बेसिकली से मेरे हाथों से कुछ अच्छा हो जाए तो बढ़िया चीज है। दिस इज व्हाट आई, मैं तो भगवान की कृपा उसी को मानता हूँ भाई देखिए कुछ अच्छा बन पड़ा तो ये बहुत अच्छा हो गया, और क्या है। थैंक यू सर, आप बहुत इंस्पायर करते हैं, आई एम श्योर सब जो देख रहे हैं, समथिंग टू फील प्राउड एंड इंस्पायर्ड। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।